So Vineet, why does poetry matter? Why does poetry matter? Well, I think poetry tells us that at a human level, we are all but the same. We have the same questions, we feel the same, we have the same struggles, we all long for love and for strong relationships, and that we all have a need to communicate these innermost feelings to other people. We all need to be heard, which is why I think we can often see a part of ourselves in someone's writing. Poetry also creates hope in a world which is otherwise becoming quite ugly. It tells us that we can be sad and feel pain and be confused and not have all the answers, and that's all right. It's only human to feel all of this, and that we are not the only ones feeling all of this. And where does this poetry come from? Poetry कहाँ से आती है? ये नज़्में, ये कविताएं कहाँ से आती हैं, क्या बताएं? ये नज़्में, ये कविताएं कहाँ से आती हैं, क्या बताएं? एक एक लफ्ज़ जोड़कर कब बड़ी हो जाती हैं, क्या बताएं? बच्चों की तरह पैदा होती हैं, बच्चों की तरह पैदा होती हैं, कुछ देर खेलती हैं, बातें करती हैं, कब घर छोड़कर चली जाती हैं, क्या बताएं? कलम से स्याही बनकर निकल गई तो निकल गई, रह गई तो रह गई। दिल की दीवारों से बचकर इधर गई, कभी उधर गई, बह गई तो बह गई। कभी जबान पर आते आते उल्टे पांव चली जाती है, कभी जबान पर आते आते उल्टे पांव चली जाती है, कभी रात भर शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को जगाती है, कभी हफ्तों हफ्तों नजर से ओझल छुपती है, शर्माती है, कभी अधपकी सी बेशर्म कमबख्त सरेआम चली आती है, कहती है कोई तो मुझे नाम दो, कहती है कोई तो मुझे नाम दो, बेवजह आ तो गई हूं, कोई दुनियादारी का काम दो। मैं कहता हूं बस बैठी रहे, मैं कहता हूं बस बैठी रहे, मैं हूं ना लंबी बातें कर, कुछ मेरी सुन, कुछ मुझे सुना, कुछ कल के आज के नगमे गा। क्यों बार बार उठ जाती है, क्यों बार बार उठ जाती है, चुपचाप आज बस इतना कर, स्याही सी निकल कागज पे उतर, स्याही सी निकल कागज पे उतर, मेरी है तो पन्ना हो जा, कहीं भूल ना जाऊं मैं तुझको, कविता होने का फर्ज निभा, मेरी है तो पन्ना हो जा। तो कहां से आती हैं, क्या बताएं? Tell us, why the Good Poetry Project? The Good Poetry Project really, you see, poetry focuses us on what might look ordinary but is important for us in life and gives us welcome relief from what we get bombarded by on social media. It helps us focus on what really matters. And finally, like all good art, poetry can be a daily source of support and encouragement and joy and happiness to live a better life. So March 21st is World Poetry Day, and so my request is, if you have children and young adults around you, introduce them to good poetry. If you manage a school or teach, use this opportunity to talk about poetry. It does not matter what the language of the poetry is. क्या फर्क पड़ता है? If you run an organization, take an hour out and get people to talk about poetry, encourage young people to read and write poetry. You will not just be helping people develop great communication skills, but also teaching them to appreciate life and life's beauty. Starting the 21st of March, we at Word of Mouth are starting the Good Poetry Project. I shall be reading poems of the kind that I believe will bring hope and joy into our lives, international poetry. We will otherwise be publishing the poems on our channel, YouTube, Facebook and Instagram. Do please take a moment to subscribe. Much sunshine and laughter to you, dosto. See you soon again.